how we are going to start, Vinayak sir? So whether we have some formalities or I can start. Sir, just wait for good morning, sir. Dr. Anand this side. Anand sir, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, just give us 5 more minutes so that others can also join in, and then we will start. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No good issue. morning, No sir. issue. How are you, sir? Excellent. Okay, very nice, sir. Yes. Just give us 5 minutes. We will start, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Please Okay, start. thank you, sir.
Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Good morning. Good morning. Thank you. So, in continuation of our online guest lecture series under Dimension 4, today we have with us Professor Umesh Gramopadhyay, sir. Sir will be delivering a session on connecting to self. Sir has completed BA, LLB, LLM, MPM, and MBA. Sir was gold medalist in LLB and he was awarded with 7 awards at LLB level. Professor Umesh Gramopadhyay, sir, is having 15 years of experience in the field of academics, mentoring, and training. Sir has also authored 2 books. So, dear students, without taking much of your time, I will hand over the session to our guest of honor, Professor Umesh Gramopadhyay, sir. Over to you, Umesh, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Friends, is it possible that you start in between your camera? Is it possible? Yeah, it is definitely. We will have a photo also, sir. Yes, no. Is it possible? Just all of you, just in between, at least start your cameras. So what we can do is, sir, initially, before you start the session, we will have a group photo, and then in between they can switch on or switch off their cameras. Okay. So all the students are requested to switch on their cameras. We will have a first group photo with Umesh, sir, and then we will start with the session. Please switch on it fast. Rutuja, switch on your mobile. Sorry, switch on your camera. Hi, Komal Gag. Shraddha, Parash, Saurabh, Deepak, Shweta. Hi, all of you. Fast. Yes. Shashank Jadhav, Ishwari Yes. Jagre. Good morning, sir. Yes. Hi, Pooja good morning. Makode. Good morning, Dipali. Do it fast. Hello, Atul, Yashodan, Saurabh, Priyanka. Hello, sir. Aishwarya. Mohit sir, you can click a group photo. Hi. Yes, sir. Yeah. Yes, Komal. Thank you, Umesh sir. You can now. Yes. You can start with the session, sir. Please go ahead. Keeping a camera on is absolutely not a compulsory, but if you keep a camera on and if it is a possible for you, try to keep it. Why? Because it is a good for me also to look at your gestures, whether I am applicable to you or not. Right? So whenever it is a possible in between, at least you keep a camera. 1 or 2 students agar rahega to bhi mere liye bahut badhiya rahega. Very nice. So I'm very much thankful for Pade sir. Why? Because his name is Antim Laksha of my life. Pade sir's name is Antim Laksha of my life. Anand. Right? So we all are here, and if I'm not wrong, you all are first year MBA students. Am I correct, Shraddha? Yes, sir. Very good. Very nice. The second year also. Yes, second year also. Yes, second year students also. Very good then. Right? So the first question come in our mind that why we are here for a MBA, isn't it? Why we are here for a MBA, first year students, and why we are doing a MBA second year student. This is the basic question which always come in my mind when I did my MBA. So we will start with a very nice song. The meaning of a song you will understand, but the intention of playing this song, intention of the song is a very, very clear, right?
Vinayak sir is also with us. Don't you think, Rishi, आप ऐसा कभी thinking करते हो क्या कि when you start your MBA, this is the thought which we are taking or carry forwarding of successing this thought. आप सब लोग enjoy करो, बाद में हम अपना सेशन 2 मिनट में शुरू करते हैं. Are you able to listen it? This is what our feeling about life. Okay, this one is a small song for you. All of we always into this song. दुनिया में आए हैं तो काम करना पड़ेगा, जिसने दर्द दिया है वही उसका मलम भी देगा. With this attitude still we are, right? So I have one question before I start this. Are you with me? Say yes, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, मुझे Yes. 4 ही लोगों का एस सुनाई दिया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे और एस चाहिए. मुझे और एस चाहिए. Yes, sir. We are with you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Only why I have a 1 hour. This 1 hour I required your participation. Do not sit in a class with some kind of predominations, pre-thinking in your mind that कि अब क्या होने वाला है. Just think, just sit in a class that कि we are going to understand the life lessons. I am here to connect yourself with you. Please understand, my role of today's session is connecting to you to yourself. Why? We are going to answer why. We have heard the first song, दुनिया में आए तो काम करना पड़ेगा. This is the rule of a law. This is a rule of a life which we are understanding from stage. हमें पापा ने ये बताया है, बेटा तू MBA जा रहा है, हाँ प्लेसमेंट अच्छी मिलनी चाहिए. हमें पढ़ाने वाला बताता है अगर ऐसा करेगा ना तो दुनिया में तेरा करियर नहीं होगा. फ्रेंड बोलता है तुझे पता है उस कंपनी में ऐसा लगता है इसलिए तू ऐसा बिहेव कर. We are only and only following the rules and the regulations of this world, and we never ask a question to ourselves that whether I am comfortable with these rules and regulations or not. Whenever you like anything, I would like to see your thumb impression in a chat. We never ask this question. Now, guys, आपको chat अब I'm going to play a second song. Second song playing करने के बाद खत्म जैसे ही होगा आपको चूज करना है कौन से सॉन्ग में आपको 1 घंटा रहना है और लाइफ भर रहना है. So पहला make sure सॉन्ग मैंने the अभी प्ले volume, किया. Yes. so volume, वो पहले सॉन्ग का भी वॉल्यूम was not that much clear. Yes, we will do it. We will do it. Don't worry.
एक जस्ट मिनट, यहाँ पर तो अच्छा दिखाई दे रहा है. Okay, let's see. Yes, Palash. Okay, so जैसे ही सेकंड साउंड खत्म होगा आपको चैट में फर्स्ट या टू ऐसा लिखना है. Let's understand. Get instant appointment confirmation with doctors. Download the free Practo app now. This advertise is going on. Yes. Just try to listen it because कुछ network हो सकता है issue. Listen it quite fully. Listen it. Listen it. Yes. Now, before I start my session, I want that one or two. Chat में आप डालेंगे one or two. Come on, go ahead. One or two. One or two. Yes. One or two. क्या आप क्या होना चाहते हैं? आपको कौन सा गाना पसंद है? आप क्या होना चाहते हो? Most of the people have written a one. दुनिया में आए हैं तो काम करना पड़ेगा. Yes. You still people feel that कि दुनिया में आए हैं तो काम करना पड़ेगा. I cannot stay like a raja. Okay. Good. Most of you are still feeling that दुनिया में आए हैं तो काम करना पड़ेगा. Let us understand what is the rule of life. Let us understand the rule of life. This is the person in front of you, right? Today, we are going to understand connecting to self. Let us know what do you mean by a connection, and let us understand what do you mean by self first, according to me. So it is clear for you people to know. Connecting is a pool between you and yourself. Now, who is you and yourself? When I enter into a Pune for an MBA, I can see certain things from my eyes. When I enter into my own bedroom before sleep, I feel certain things about me. What I am
and what others are, what I am, and what are the expectations of other, what I am, and what is the goal of mine, इस बीच में जो दूरी है, उस दूरी को कम करना मतलब है कनेक्टिंग। तो सेल्फ का मतलब क्या है? We have two things which we feel it. One is a body and the second is a mind. If we align these two things very sincerely, very nicely, according to our own potentials, according to our own understanding, it is known as a connecting to self. In some countries, you must have heard this. Am I audible? Yes, Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes. Yes, sir. In some countries, Yes, sir. when small kids has been sent to schools, they've been asked to sit into big halls. They are sitting in a big hall with their parents. Parents has been told, yeah, do not drive your son or daughter, do not drive your kid. उसका हाथ मत थामो, उनके साथ रहो. Don't touch your kid or shoe, but find that he will not fall somewhere else. The next point, they've been asked and sitting. Yes, Suraj, you raised your hand. Suraj, is there any difficulty? Is there any problem? So in this next term, these all 100 students, 100 people, 100 childs are going in the corner of everywhere, going into a corner of everywhere, and they find themselves and they find their own toy for them. हर एक को कोई ना कोई टॉय पसंद आता है, वो उसके साथ खेलता रहता है. After experimenting of 15 days, 1 month, then उस बच्चे का प्रोफाइल बनाया जाता है कि he will be interested in this area. These things never happen with us, please understand, guys. And we are not going to look at our past tense. We are here to understand the present tense. So it means हमें क्या अच्छा लगना चाहिए, क्या अच्छा नहीं लगना चाहिए, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, why we are MBA, why we are not MBA. Even if I will take an interview of all of you and will ask only one question, why you are MBA, 50% fails to answer it with a confidence, because we really don't know. This is the just example that we are doing MBA. That is what I'm telling you. But it happens with every career. It happens with every decision which we take. So, इस सेशन से आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि how to take a decision in your life, how to connect ourselves, how to connect yourself. All right. Two things happen in our life while taking a decision. The result of the decision will be a happiness of a person who take decision and a society's happiness. For example, if I will become a collector, if I become a district magistrate, society भी happy होती है और मैं भी happy होता हूँ. Now understand it very carefully. Another way of connecting to self is I choose to help the poor people who are staying in a tribal areas. Now here, your family members may not be happy with you.
Your near and dear ones may not be happy with you, but you are happy with yourself. Third category, which is a very dangerous, but sometimes there are. You are not happy with your work. You are not happy. For example, 60% job seekers, 60% persons who are doing a job, they are going at 9 o'clock and coming at 5 o'clock, and they every day they said, in every type of task, they used to give us some kind of reasons, either this or that, saying that. कोई अच्छी बात नहीं हो रही है लाइफ में. But when you are going there at 9 o'clock and coming at 5 o'clock, but some people are very happy. Why? Because you are there. Now, this is the third category, my friends. We have to search our category. We have to search ourselves where we are best. This is what are the things which we are going to understand today. So learning, what do you mean by a learning? What do you mean by acceptability? हम ये सबके मीनिंग समझने वाले हैं और कनेक्ट करने वाले हैं अपने लाइफ के साथ. लर्निंग, एक्सेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, लिसनिंग स्किल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग, एंड हैप्पीनेस. These are the keys of a success. If learning, acceptability, adaptability, listening skill, understanding, and art of happiness is with you, MBA तो छोटी सी चीज है, आप लाइफ भी पार कर जाओगे. It's an excellent words. It is an excellent words, but do not take it as a words. Try to implement it. कुछ फैक्ट मैं बताऊंगा आपको, कुछ उपाय बताऊंगा आपके साथ. लास्ट में हम 1-2 पीपीटी पे उपाय पे भी उपचार करेंगे उसके ऊपर. यहां तक आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? टेल मी आइदर यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. Good. What is the education? Why we are taking education? Skinner says education is what survives when what has been learned and has been forgotten. पढ़ाई करने के बाद, मार्क्स मिलने के बाद और हम भूलने के बाद, देखो पढ़ाई करने के बाद, मार्क्स मिलने के बाद, फॉर एग्जाम्पल which definition it is, either it is a Peter Drucker or Allen. ये पढ़ाई के लिए important था, हमने लिखा. What are the 4 P's? What are the 4 P's? है ना, price, process, whatever things are there. पढ़ाई के लिए important था, हमने पढ़ा, marks मिले. Education is what survives when what has been learned. I understand today types of training in human resource management. I understand today types of recruitment in human resource management. I understand today a difference between recruitment and selections. I understand what is the difference between saving account and a current account. Learned and has been forgotten. बहुत सारी चीजें हैं. We generally forget. And if something remain, that is called education. That is called education. Now decide, think why you are in education field. और ये something remain होने के लिए, what I have to keep my attitude, what type of thinking I have to do. MBA second year students, most of we are
completed our graduation, someone of you have completed your post graduation also, someone of you have completed your engineering degree also, and then you have taken admission for MBA. Someone of you may be working somewhere, someone of you are already having a work experience. Now if I ask you a question that are you satisfied what you are having, what you are learning, what you are getting, answer is happily satisfied or no. Why? Because we are always into the search. And why we are always into the search? Why? Because we should not understand ourselves, what is remaining in our hand. मेरे हाथ में क्या रहा मुझे पता नहीं चल रहा है. Education is what survives when what has been learned. कि आप सीखने के बाद क्या रहता है वो, and भूलने के बाद क्या रहता है वो. जो रहता है उसको हम education बोलते हैं. Michael Jordan says very nicely. Please understand, guys. Even I will give you the one of the example of Edison also. I have missed more than 9,000 shots in my career. Now listen, it's Michael Jordan. You know that Michael Jordan, you know. I have missed more than 9,000 shots in my career. Now listen carefully, guys. I have lost almost 300 games. I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted. Now listen carefully. 26 times I have been trusted to take the game winning shot and missed. 26 times. गेम विनिंग शॉट, इसका मतलब वो जीत वर्ल्ड कप जीत सकता था, फाइनल जीत सकता था, सेमीफाइनल जीत सकता था, ऐसे शॉट्स. 300 games he lost. I have failed over and over again in my life. And that is what, or that is why I succeed. Now understand the definition of a success for Michael Jordan. Understand a definition of a success for a Michael Jordan. स्वारगेट के बस स्टैंड पे बॉम्बे जाने के लिए मैं अंदर जाता हूं और बस मिस होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. ये हमारा एटीट्यूड है बच्चों. I enter into a Joshi Vada Pav, and when I come to know that the all Vada Pav has been finished, we feel in दुनिया में सारे वड़ा पाव खत्म हो चुके हैं. ऐसे हालात में इमीडिएटली हम आ जाते हैं क्योंकि हमने अपने माइंड का, बॉडी का ट्रेनिंग नहीं किया है. You are a true, you are a honest. Still, if your boss is asking you for certain kinds of negativity, हम ऐसा मानते हैं कि दुनिया में मैं अकेला हूं कि मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है. Am I right or wrong? Yes, Palash, Omkar, am I right or wrong? These are my feelings or not? Yes, sir. Yes, sir. You are right. Yes, sir. Okay, enjoy this session and don't sit this session. Why? Because the matrix has been organized this session and we have to do it. So I allow you to quit this session also. क्योंकि उन लोगों की जरूरत नहीं है जिन लोगों को खुद की जरूरत नहीं है. समझो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझो उसको, समझने की कोशिश करो. What we can understand. Michael Jordan is the person who missed 9,000 shots and still he is one of the best player. And this is a success story of him. This is a definition of him. Right? Edison, at the 10,000 shots, fired. His all laboratory got fired. He called his son and wife and said, "Look at this." Why? Because you will not see such kind of fire again. Now there will be a light in my house. 10,000 times when you fail, then the person invent a light. Right? ये सब चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं मैं, because I'm a counselor somewhere else.
I gone through last 15 years when I'm working with the MBA students. More than 15-20 years I'm working with the MBA students. I got a one point is that after completion of a MBA, now please, before completion of MBA, I'm not telling you, after completion of MBA students, 70% students still are confused that what to do in a life. Then why did you do MBA? Still are confusing. अब क्या करें? अब हो गया, क्या करें? मेरा यूथ, देश का यूथ, at the age of 25, जहां पर वो 19 से कमाना शुरू करना चाहिए था, at the age of 25, मेरा यूथ, मेरा सिटीजन, मेरा बच्चा कंफ्यूज में है आफ्टर गेटिंग गुड मार्क्स इन MBA, CG पे अच्छा 9 पॉइंटर लेने वाला भी कंफ्यूज है, अब मैं क्या करूं? खत्म ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समझा नहीं है खुद को क्या करना चाहिए, ये समझा ही नहीं है मैंने। What I am, how to do a journey, how to proceed with this journey. I think therefore I am. Look at me, I have been selected for 3 corporate companies. I've been selected for 2 government jobs. I just rejected it. Why? Because teaching was my passion. Motivation was my passion. Counseling was my passion. Mentoring was my passion. And I stick with the passion. And believe me that the people who have chosen these kind of things where I denied, they are on the crores. I may be on a lakhs, but look at my face, I'm satisfied in my life. And once you satisfy in your life, once you are doing very nice with your career, once you are doing with very nice with your passion, वो सब बंदे मेरे पास आते हैं एंड शाम को रात के 1-1 बजे तक मेरे से बात करते रहते हैं, उमेश ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ। BMW में आते हैं, रोते हैं और चले जाते हैं। I used to go with my Wagoner car, समझाता हूँ और चला जाता हूँ। Understand the difference. I'm not talking something about myself. I'm talking you about that. What is the passion? How you are going to create a passion with you? If you feel that you want to open a saloon franchisee or a saloon link after doing MBA, it is also not wrong, my friends. Do it. Just do it. We have seen so many examples. Why? Because we don't have a dare. That is what I think, therefore I am. If you start thinking the negativities, हर चीज में कुछ ना कुछ तो अच्छा ढूंढो. Tell to yourself that you are the best person in your life. You are the best, and you have that potential to connect it. I think, therefore I am. Am I audible? Am I connecting to yourself or not? Yes, sir. Yes, sir. Good. Are you enjoying? Yes, sir. Yes, sir. Understanding. Yes, 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 yes. You have my mobile number also. Whenever you feel in 12 hours, 9 to 12 o'clock, 9 to 10 o'clock, you can call me also anytime. I am available. I will help you for any kind of your guidance. Don't worry about it, Mayuri. All right. And I think Mayuri, you must be there, na, in the last session. Kuch tha ka? Amne. Yes. Next. That's just I'm just sharing with you a life lessons, and I will share this PPT with you also. Anand sir ko main PPT mail karta hu. See, these are the life lessons. You and everyone else, in bracket, everyone else, you have a prejudices, admit it already and move forward from there. There is a conflict. Now listen carefully. This thoda philosophical sentence hai, lekin listen carefully. Aap thoda jaagte raho. There is a conflict between me and me. There is a conflict between me and my culture. There is a conflict. There is a conflict between my feelings and others' feelings. There is a conflict between me and education. Please understand. You have a prejudices. ये prejudices मतलब क्या है? कुछ ऐसे चीजें हमारे दिमाग में बैठी होती है, इतनी बैठी होती है, right? कि
जिस चीजों को हम पकड़ के we cannot go forward with the any kind of our contract. You have a prejudices, admit it, accept it. You have a prejudices, admit it, accept it. पहले accept करना सीखो. Yes, I have a prejudice. बिल्ली रास्ता काटती है तो मैं पीछे आता हूं. Admit it, accept it. Yes, I have I have a communication problem. Admit it, accept it. Yes, I have a stage fearing. मैं स्टेज के सामने जाकर नहीं बोल सकता हूं. Admit it. कोई भी नई चीज जब मैं सीखने के लिए जाता हूं तब मैं डरता हूं. Admit it. कभी भी मैंने बचपन में देखा था. नाउ लिसन केयरफुली. ये कहां से कैसे आता है? मैंने बचपन में देखा था कि हम सब क्लास में बैठे थे और क्लास में से एक टीचर ने एक बच्चे को बोला कि तू आकर व्हाइट बोर्ड पर इसका स्पेलिंग लिखो. वो व्हाइट बोर्ड के सामने गया. उसको वहां तक समझ में कुछ नहीं आया था. वहां तक समझ में उसको कुछ नहीं आया था. ही वाज सो इनोसेंट. 8-9 स्टैंडर्ड की बात थी. ही वेंट टू देयर व्हाइट बोर्ड के पास. वहां पे तो व्हाइट बोर्ड नहीं था, ब्लैक बोर्ड था. ब्लैक बोर्ड पे चौक उसने लिया, कुछ लिखने की कोशिश की. इट्स अ सिंपल, स्पेलिंग वाज अ वेरी सिंपल. ही रोट इट देयर, right? And while writing it there, he falls somewhere else. Shivering started. He falls somewhere else. Shivering started. He started crying. He started crying, and when he started crying, now he just turned there towards the audience where we people are sitting. वो हम में से ही एक था, आगे गया था, हम यहाँ पे बैठे थे. वो he started crying, and you look at them, and other people started laughing at him. आता नहीं था तो आगे क्यों गया? लाफिंग करने के साथ साथ एक थॉट हमारे दिमाग में चला गया कि अगर ऐसा कोई आदमी आगे जाता है, कुछ कया करने का कोशिश करता है, लिखने की कोशिश करता है और उससे कुछ गलती होती है, अगर वो शिवरिंग में चला जाता है, अगर वहां पे गिरता है तो लोग हंसते हैं. ये दिमाग में इतना स्ट्रांगली बैठ गया मेरे कि मैं भी कभी आगे जाने से डरता हूं क्योंकि लोग मेरे साथ हंसते हैं. You got my point. Yes, sir. Why? Because of this prejudice. Because of this prejudice. I tell you, 100 champions were swimming into the swimming tank, and I was the only one person who had very little experience of swimming. I also started swimming, but my enjoyment of mine swimming was much better than those. Why? Because they were doing it professionally, and I was doing it with it passionately. You have a prejudices. दिमाग में कुछ prejudices हो सकते हैं. Admit it already and move forward from them. See, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ फादर ऐसे होते हैं, कुछ मदर ऐसी होती है कि हमेशा आपको पीछे रुकेंगे क्योंकि उनकी हिस्ट्री वैसी है. उनको डर लगता है. उनका रिस्पेक्ट करते हुए, उनका सम्मान करते वक्त आपको आगे जाना है, डटा रहना है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके ऊपर. और जो है वो एक्सेप्ट करो ना. ट्राई टू एक्सेप्ट इट. जिसके पास BMW है वो Porsche लेगा. It's okay, but if you don't have, accept it that I don't have and I want a 4-wheeler just now. Immediately I just required a 4-wheeler or whatever that may be. Enjoy this, go forward. Enjoy present, go forward. Enjoy present, go forward. Move forward from there. यहाँ से आगे निकल के चलो. Don't sit in there. Don't sit there. Write down these statements in your diary. Mention that what you are going to do. Right? Then let's take it a factual baat karte hai. What are the subjects you have? Right? 6, 7, 8, 9, 10 subjects are there. Where you are lacking. Suppose if you ask me a questions, I am not good in account. I should write. I am not good in account. Now I have to improve account. What are the things which I need to do improving the account? Talking to a faculty. These are the things. When you face interviews,
Just go through this, some your seniors. When you face interviews, there are typical questions they will use to ask you. What are those typical questions? Why don't you start it from tomorrow? Why don't you start it from today? राइट ये पकड़ के चले हैं कि हमारा काम कॉग्निशन में होगा ही नहीं, क्योंकि कॉग्निशन बहुत बड़ी कंपनी है। मेरा प्लेसमेंट, मेरा करियर सिम्बोसिस जैसा होगा नहीं, मेरा करियर IIM जैसा नहीं होगा। अरे क्यों? उनको सींग लगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्योंकि हमने दिमाग में डाल के रखा है कि मैं फेल्योर हूं, मेरा यही लिमिट है 1 BHK का। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। पैसा सब कुछ नहीं है। ये सब चीजें करते वक्त अगर आनंद आपके साथ नहीं है, पैशन आपकी नहीं है, आपकी हैप्पीनेस नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट इट। That's the line. What everybody believes is not always what's actually true. What everybody believes is not always what's actually true. Always remember guys, सब दुनिया जो बोलती है वो कभी कभी सच नहीं होता है। सच आप हो, आप डिस्कवर करो, आप आगे जाओ। मेरे 2 स्टूडेंट्स मेरे पास रोते रोते आए थे, सर बहुत तकलीफ हो रही है, खाने के वांदे हैं, पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। सिर्फ ऐसा ही बोलने उसको बोला था कि बैठो। मैंने इधर उधर देखा, मेरे घर में 10-20 किलो रद्दी पड़ी हुई थी। मैंने उनको बोला कि ये रद्दी ले लो, बेचो, आपको कुछ, मैं फोकट के पैसे किसी को नहीं देता हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई नेवर गिव इट टू द अदर पर्संस, नॉट फॉर माय स्टूडेंट आल्सो। उसको पढ़ा के मैं दूंगा। पैसे कमाने की आदत मैं उसको डाल सकता हूँ, पैसे कमाने की हिम्मत दे सकता हूँ, स्किल दे सकता हूँ, पैसा नहीं देता हूँ। एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय स्टूडेंट। मेरा एक दूसरा फ्रेंड था, उसको कॉल करके मैंने बोला कि रद्दी तुम्हें देने के लिए आएगा, उसको 20 रुपए प्रति किलो से रद्दी देना। उस टाइम पे 11 रुपए रद्दी चल रहा था, 20 रुपए से उसको रद्दी दिया गया। 10 का उनको पैसा मिला। दे कम टू मी, सर ये पैसा मिला। दे वर ऑनेस्ट, सर ये मुझे पैसा मिला, हम क्या करें। उसका 50% मैंने कहा कुछ तो खाओ, और 50% इन्वेस्ट इनटू द अदर पीपल्स रद्दी। सर आप, मैं समझा नहीं, समझता हूँ, मैं समझाता हूँ। आई आस्क्ड देम, इट इज अ कोल्हापुर, व्हेन आई वाज देयर इन कोल्हापुर, है ना। मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, इतने पैसे ले लो, रिक्शा करो, ऑटो करो, और एक सोसाइटी पकड़ो और उनको पूछो कहीं पर रद्दी है क्या। आप अपना क्वालिफिकेशन बताओ उनको। दे वर डूइंग अ फर्स्ट ईयर LLB। उनको क्वालिफिकेशन बताओ, वो तो बोलो उनको कि मैं काम के लिए कर रहा हूँ सब चीजें। सब लोगों ने उसको रद्दी दिया। सब लोगों ने जैसे रद्दी दिया, उनके पास जाने के बाद 50% मालिक को दिया, 50% ये दिया। जो भी श्रीमंत लोग थे उनको कोई पैसे की उतनी जरूरत नहीं था, इनका काम शुरू हो गया, टर्नओवर चला गया। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, within a 3 years turnover of their, I'm talking about 2006 point, 3 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस वो कमाते थे, टर्नओवर करते थे, खुशी से काम करते थे। उन्होंने फिर मैंने 2-3 चीजें उनको बताई, they started it. What everybody believes is not always what actually true. रद्दी का काम मैं करूं क्या? अभी भी वो काम शुरू है, और अभी वो दोनों अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम भी शुरू है, करोड़ों का व्यवसाय वो कर रहे हैं। Now please understand guys, उनको उमेश सर मिले, आपको नहीं मिल सकते ऐसा नहीं है। उमेश सर हर जगह पे है, क्योंकि पढ़ाने वाले लोग ही अपने इंडिया में ज्यादा है, पढ़ने वाले कम है। सजेशन देने वाले ज्यादा है, लेने वाले कम है, आपको भी पता है। When 3 friends are discussing something about, we unnecessarily jump into the discussions and will relate our fact to that. ये अपना घिनौना नेचर है। तो इसी नेचर को हम अगर प्लस पॉइंट बना दे, तो what everybody believes is not always what is actually true. Please understand guys. Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. That's it. That's it. छोटा बच्चा अगर कोई मैकेनो का कोई घर कर रहा है, तो आप देखा होगा 2-3 बार गिरता है, फेंकता है, फिर से करता है, फेंकता है। Failure is a नियम, understand ना guys?
फेल्यूर इज अ नियम. नौकरी नहीं मिलना, ये प्रॉब्लम होना, फेल होना, नियम. नो लॉस ऑफ इंथुजियाज्म इज अ टीचिंग, इज अ लर्निंग, इज अ एडेप्टेबिलिटी. कौन से भी हालात में इंथुजियाज्म आपका लॉस नहीं होना चाहिए. लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट बंद पड़ गई, डरना नहीं, नाचना शुरू करो. लोगों के दिल में खुशी निर्माण करना शुरू कर दो. जस्ट फील अ मिरेकल. 10 लोगों की नौकरी लग गई, आपकी नहीं लगी. स्टार्ट शेयरिंग द स्वीट्स विद दोस 10 पीपल. वेरी मच थैंक यू. आपकी हो गई तो 101% मेरी होने वाली है. सी द हैप्पीनेस. हमें ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है. एवर ट्राइड, एवर फेल्ड, नो मैटर. ट्राई अगेन, फेल बेटर. दैट्स इट. दिस इज द लाइफ. एवर ट्राइड, बहुत किया, बहुत कुछ, कोई इशू नहीं. फिर फेल करो. इस बार बेटर फेल करना है. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडिसन. आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? जस्ट वो थम का मुझे दिखाई देगा तो अच्छा रहेगा. यस, कम ऑन. आर यू विथ मी? You can put whatever you feeling about this session in text also. I think Anand sir will share with you one feedback also, feedback form also. You can give me a directly feedback also. You can quit this session if you don't like also. I do not make it compulsory, right? Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, and fail better. Now this is what the very important things which you have already studied. A ship in a port is safe. ट्वेल्थ किया, अच्छे मार्क्स मिल गए. पापा और मम्मा आ गए नेक्स्ट एडमिशन देने के लिए. गाड़ी में से आ गए, एडमिशन लिया, चला गया. वो भी सिंसियरली किया, अच्छे मार्क्स मिले. एमबीए के लिए आया, एडमिशन लिया, अब एमबीए कर रहा हूं, अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं. A ship in a port is a safe. You are not made for this kind of things. Please understand, guys. But that's not what ships are built for. Have you ever written a research paper? All of you. Have you ever written an article? Now, Vinayak sir is with me. Have you ever met him? Have you ever sitting with him for writing a certain kinds of books? कभी आपने ये थॉट लिया दिमाग में कि हम इसका स्टडी करते हैं कि एमबीए के कितने लोग लाइब्रेरी में विजिट करते हैं? डू इट. 10 कॉलेजेस लेना और 10 कॉलेजेस में एक रिसर्च करना कि हाउ मेनी एमबीए स्टूडेंट्स जनरली विजिट अ लाइब्रेरीज एंड व्हाट आर द बुक्स व्हिच दे जनरली रीड इट. मेक अ क्वेश्चनर, डू इट एंड सक्सेस. और अच्छे जर्नल में प्रकाशित करना. यू विल अंडरस्टैंड योर वैल्यू. पीपल आर देयर हु आर सर्चिंग अ गुड. We fails to give them a good, guys, because we feel that whatever I have, I am a good. Ship in a port is a safe, but that's not what ship are built for. Shuru karo, just go. Suppose, for example, you are going to start with the MBA finance. How many of you are interested in MBA finance? Let's take it as 50% of you. 50% of you are interested in MBA marketing. Guys, very good. Maybe you are working somewhere else. Very good. Think something different. Think something different. Without your identity, go to a one medical shop and try to sell a product and understand patience है क्या मुझ में? मैं कन्विंस कर सकता हूँ क्या? है ना? आपकी 3 डिग्री है, उस बंदे की 1 डिफॉर्म की डिग्री है और वो आपको बोलता है रुक 2 मिनट. धजिया उड़ा देता है आपके लाइफ की. और आप में वो गुण है क्या सहन करने का? आज ही चेक करो. आज क्यों चेक करो? क्योंकि जब सैलरी शुरू होगा, जब आप पेरोल पे जाओगे, तब उसके साथ ईगो आता है एंड यू विल ऑलवेज गो विद देयर विद दिस सर्टेन काइंड्स ऑफ कोट्स एंड दिस थिंग्स एंड यू वुड से दैट कि ए तू आवाज मत कर, मेरी भी लेवल है. आज कुछ नहीं हुआ, तब ये ट्राई करना. If I will ask
respected Lata Mangeshkar madam to sing a song, and if I ask you to sing a song, आपकी गलती कितनी भी हो लोग ताली बजाएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आपकी ये उम्र गलती करने की है। लता मंगेशकर अगर गलती करेंगे तो लोग ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि उनको भारत रत्न ऑलरेडी दिया गया है। नाउ अंडरस्टैंड, वहां तक पहुंचने के लिए ये गलतियां करनी जरूरी होती है, और गलतियां करने के लिए घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। गलतियां करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना बहुत जरूरी होता है, राइट। गलतियां करने के लिए शिप बाहर निकालनी पड़ती है। Try to write a blogs, try to make some events, try to communicate a good people. At least my boys, Omkar, you know, wherever you feel, you just go and sit into the one garage. आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो गैरेज में जाओ, बैठो, गैरेज में देखो कि गैरेज कैसा चलाता है आदमी, अन्ना कैसे गैरेज चलाता है, ऐसे लोगों के साथ स्वीट स्वीट बातें करता है। लर्निंग। ये शिप, मैं अपने शरीर को बोल रहा हूँ, अपने अहंकार को बोल रहा हूँ, आपके माइंड को बोल रहा हूँ मैं, राइट। ये तो फैक्ट है। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, सोक्रेटिस। आपको एक बात यहीं पे मैं बोल देता हूं, अगर आप दिन में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई और आप शाम को आराम से सो रहे हैं तो आप में कुछ गड़बड़ है, समझो मेरी बात। थोड़ा अलग तरीके का ये सेशन है, आपको कुछ कहीं पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, या थिंकिंग ऐसा नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम नॉट अ गुडी काइंड ऑफ अ पर्सन हु क्रिएट माय गुड इंप्रेशंस इन योर माइंड। ऑलवेज अंडरस्टैंड, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर एक सुधे को भी रात में सोने से पहले अगर ऐसा लगा कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया, अनएग्जामिन्ड लाइफ, प्लीज अंडरस्टैंड। ये है, अरे ये मैं क्यों नहीं कर पाया, इस थॉट के साथ हम सोना, तब कल का सुबह और अच्छी तरह से आ जाएगा। लाइफ इज नॉट अ वेब सीरीज, लाइफ इज नॉट अ सिटी ऑफ गोल्ड, लाइफ इज नॉट अ महारानी। These are the things, these are known as a time pass. You have to do it a time pass after achieving at least one target a day. मैं लेक्चर बंक करता हूं क्योंकि मुझे उस वेब ऑफ सीरीज देखने के लिए जानी। दिस इज नॉट अ टारगेट। मैं वेब सीरीज बंक करूंगा क्योंकि मुझे कोई लेक्चर करना है। दिस इज अ टारगेट ऑफ लाइफ। You are so lucky. Your faculties are not lucky, my friends. You are so lucky that you have got your faculties like you. If you ask them personally, when they were doing their MBA, nobody was there to tell them what is the right and what is the bad. Why? Because everyone was new in that field. Unexamined life is not a worth living. So understand, जब परीक्षाएं लिए जाती है आपकी, जब आपके सामने संकट आते हैं, तब tell to the people that you are a lucky person, that you have a guts, so you are solving it. You have a guts, you are solving it. मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो बड़े बड़े गाड़ियों में उतरने के लिए 2-3 लोग लगते हैं उनको, और मैंने देखे हैं आप जैसे लोग जो स्वच्छंद रहते हैं, जहां चाहिए वहां वो खड़क वसला जाता है, एंजॉय करता है, कितने भी दूर सिंहगढ़ फोर्ट पे चलता है। प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, इट हैपेंस। व्हाई? बिकॉज यू फील इट। एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन एंड आई एम फेलिंग इट और आई एम पासिंग इट। दिस इज द लाइफ। Now will come, this is 11:57. Class starts 5 minutes late, so we'll take a 5 minute only extra and we'll end it. Don't worry about it. To improve the golden moment of opportunity and catch the good that is within our reach is the great art of a life. That's it. एक दिन बहुत कंफ्यूज हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं मेरी बात बोल रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज हुआ क्या करना है। I was selected for a judge at LLB. I was selected for advocating, absolutely. I was selected for some, legal coordinator in a City Financial Bank. That time City Financial Bank was there. 3 opportunities were there. समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। 2 दिन बैठा, फिर अपने आप को पूछा
what was the intention behind you to join LLB? The intention was to teach a law to a layman. जिनको law पता नहीं है उनको law पढ़ाना. Then forget about these 3 opportunities. Start working towards your passion. And I just kicked these 3 opportunities and I started towards my passion. Now there is in front of you. I never care about anything. I'm a very much happy person in my life. कहीं पर भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, पढ़ाना छोड़ता नहीं. Always remember this. Now these are the certain steps for you. एक दो लास्ट की पीपीटी ले लेंगे और रुकेंगे. अब बोर हो गए सब लोग? No, sir. No, sir. No, No, sir. No, sir. ऐसे बहुत सारे सेशंस है. काम पैसे के लिए तो मैं कभी करता नहीं हूँ, अपने आप आ जाता है. कभी भी आपको लगता है तो हम आनंद सर के साथ बैठकर एक दो सेशंस ऐसे और ले लेंगे कुछ टॉपिक्स के ऊपर. प्लानिंग कैसे करते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, यू नो, हाउ टू ओवरकम सॉरोज. हमारे जो सॉरोज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम हमारा प्लान कैसे कर सकते हैं कि दूसरों को भी खुश रख सके और हम भी खुश रह सके. ऐसे बहुत सारी चीजें मेरे पास है. सो विल हैव अ डिस्कशन. नो हु यू आर. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, बाद में दूसरा. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे मयूरी है, मयूरी को बोला कि तू समोसा खा. मयूरी बोली कि आई कैन नॉट ईट अ समोसा, व्हाई, बिकॉज माय बॉडी इज एसिडिटिक. और अगर मैं समोसा खाती हूँ तो मुझे एसिडिटी होती है, तकलीफ होती है. आई कैन नॉट गो फॉर द समोसा. अतुल सेज टू मयूरी, खाओ, क्या होता है इतना सा खाने से. श्रद्धा सेज दैट कि तुम मेरी भी नहीं सुनेगी क्या, सुनो ना, थोड़ा सा तो खाओ. देन मयूरा टुक अ just little bit, eat it, and she says, do not, I request all of you, you are my friends, do not force me. I have already taken less for your only words or purposes. I am enjoying it. Understand the way of behaving a Mayuri, right? यहाँ पे हम लोग उल्टा कर देते हैं. एक तो फुकट का मिल रहा है तो हमें अगर वो जरूरत नहीं है तो भी हम खाते हैं. ये इंडियन टेंडेंसी है अपनी. सेकंड पॉइंट इज दैट कि अगर कोई बोलता है कि तू मेरी सच्ची फ्रेंड है तो खाएगी, तो हम जरूर खाने के लिए कोशिश करते हैं. ऐसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए, उनको आज ही लात मारो, नहीं चाहिए, राइट? बी कीप गुड रिलेशंस विद देमसेल्फ, यू नो. Mayura ka happiness. Now, if I am a friend of Mayuri Joshi, then what is Mayuri Joshi's happiness is not to eat a samosa, is keeping her a happiness. ये मैं अगर पहचान सकता हूँ तो I am a good friend. Now understand, know who you are. Spend time in a silence. Every day, at least 10 minutes, be in a silence. उस silence की बात नहीं कर रहा हूँ जब सोने के बाद आप बिस्तर पर बैठकर सोना ही है, फिर भी उठना पड़ रहा है, वो साइलेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं. अवेयरनेस साइलेंस. सिट 5 minutes 10 minutes into the silence. Decide, keep maintain a डायरी, राइट? उस साइलेंस का इस्तेमाल आप अपने भविष्य के लिए करो, अपने वर्तमान के लिए करो कि क्या गलती हो रही है, व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आई एम फेसिंग, यू नो. क्या पढ़ना चाहिए मुझे, क्या पढ़ना नहीं चाहिए मुझे, मेरा करियर कहाँ से होगा, यू नो. MBA होने के बाद, सेकेंड ईयर होने के बाद, फाइनेंस होने के बाद, there are some few students who do not understand what is the difference between current account and a saving account. They do not understand what is mean by the capital gain. They do not understand what do you mean by the keeping book account. They do not understand what is the difference between CA, what are the rules and regulations of a CA and a CS also. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सेकंड पॉइंट हम नहीं करते हैं. जब आप साइलेंट में बैठेंगे, जैसे मैं आपका सेशंस लेने से पहले साइलेंस में बैठा कि क्या करना चाहिए, किस किस्म के लोग यहाँ पर हैं, किस किस्म के बंधु यहाँ पे है. सो दिस इज व्हाट, सेट अ रूटीन. सेट अ रूटीन. क्या होगा, गलती होगी ना, खत्म होगा. रूटीन नहीं हम कर सकेंगे. व्हेन वी विल try to set a routine and sometime we will break that routine also. It is okay, but try to set a routine. रूटीन लिखने की कोशिश करो. आज मैं 6 बजे उठूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा. नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट इट, बट ट्राई इट, राइट? क्रिएट द राइट सर्कल. राइट सर्कल का मतलब होता है कि पहले क्रिएट करना सर्कल सीखो. देखो, मुझे ना
वो जो दारू बीरू पीने वाले लोग हैं, इंटॉक्सिकेशन के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उसमें जाना, उस टाइम पे उनके जाना, वो बवाल मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने एक सर्कल मारा है कि ये दुनिया में मैं ये कभी नहीं करूंगा। जब मैंने डिसाइड किया है कि ये मैं कभी नहीं करूंगा, तो मैं नहीं करता हूं ना। मेरे पास ऐसे शब्द है जिससे उनका मन दुखता नहीं है और मैं वो टाल देता हूं। व्हाई? बिकॉज माय कंसेप्ट्स आर क्लियर। प्लीज अंडरस्टैंड। सेट अ सर्कल। क्या सर्कल है? घर में पापा कम कमाते हैं, सर्कल। अब मुझे क्या करना है, किस तरीके से मैं आगे जाऊं? व्हाट इज द सर्कल? व्हाट इज माय अचीवमेंट? डू यू वांट मी टू रिकॉग्नाइज एट अ पॉलिटिकल लेवल? व्हाट इज माय सर्कल? क्रिएट द राइट सर्कल। गेन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी। गेन कंट्रोल। जैसे मयूर का मैंने एग्जांपल लिया, एसिडिटी होती है, दिस इज द रिकमेंडेशंस बाय बॉडी दैट यू डू नॉट ईट। लालटेन लगाता है बॉडी, लेकिन मयूरी उसमें ठूसती है। इट मीन्स दैट यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर बॉडी। प्लीज अंडरस्टैंड। कंट्रोल करो आप बैठ सकते हो क्या? मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने कभी ये न्यूज नहीं पढ़ी है कि एक दो बंदे रात के 2 दिन का खाना नहीं खाया, स्टडी किया एमबीए का, और खाना न खाने से मर गए। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। मार्क लिस्ट देखने के बाद बहुत सारे मर जाते हैं, लेकिन स्टडी करते हुए खाना नहीं मिला इसलिए मर गए, ऐसा मैंने नहीं देखा है। बहुत 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 8 घंटे कंटिन्यू स्टडी करने के बाद बंदा चला गया, मैंने नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि वो स्टडी इंपॉर्टेंट है, वो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस से कोई कुछ नहीं होता है। गिव योरसेल्फ अ गुड होम। होम का मतलब घर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, फिजिकल नहीं बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ। गिव अ गुड कंपनी टू योरसेल्फ। बुक्स दे दो, आप अपने आप को पहचानो, आपका सर्कल बानो। राइट? सपोज इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई हैव अ लिटिल फियर अबाउट स्पीड। जो स्पीड 2000 से जाता है उसका नहीं। मैं फ्लाइट में बहुत बार बैठता हूँ, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त 100 क्रॉस करता हूँ तो मुझे डर है, तो मैं 100 क्रॉस नहीं करता हूँ। आई अंडरस्टूड माई सेल्फ। प्लीज अंडरस्टैंड गाइज। आई नेवर वेंट टू मोर देन 80। आई नेवर वेंट टू मोर देन 90 स्पीड। कोई लाइफ में मेरे फर्क नहीं पड़ता है ना, और वो मैंने छोड़ दिया। अरे ठीक है, 100 क्रॉस करने से डर लगता है ना, करेंगे नहीं, बात खत्म। लाइफ में गिव योरसेल्फ अ गुड होम, ये है। लेकिन वो 80 चलाते वक्त मैं लाइफ में गाड़ी हंस के चलाऊंगा, दुनिया देखते चलाऊंगा। जब भी कोई फूल दिखाई देता है, जब भी कोई प्राणी दिखाई देता है, तो मैं रुकता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, मैं दुनिया का चलाता हूँ। ये मेरी कार है, ये हम है, ये ऐसी चलाता हूँ। नो, अंडरस्टैंड द हैप्पीनेस गाइस एवरी टाइम। मैंने वो बात छोड़ दी ना। दिस वन दैट आई हैव लिव्ड इट। राइट? ओके, कनेक्ट विद द सोर्स ऑफ द पावर। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर हैविंग अ पावर। चला जाने के बाद आपकी बॉडी सिर्फ रहती है। राइट? ये थोड़ा स्पिरिचुअल है, लेकिन स्पिरिचुअल भी एक दो पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो करो, वरना मत करो। कुछ कोई जरूरत नहीं है। इफ यू फील योरसेल्फ, बाकी ये सब कायनात, सब जो चीजें जो आपके सामने आ रही है, आपके लिए आ रही है, दीज आर द थिंग्स ओनली टू मेक यू हैप्पी। दैट्स इट। राइट? ओके, द लास्ट पीपीटी वी विल सी दैट। रिमेंबर, आई एम नॉट माई थॉट्स। आज मुझे सुसाइड करने का थॉट आ रहा है, ये तुम नहीं हो। ये तुम्हारा एक छोटा एक्सपीरियंस बात कर रहा है। छोटे उस एक्सपीरियंस के ऊपर आपकी लाइफ पड़ी हुई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मेरा प्लेसमेंट होगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं ये सब्जेक्ट पास होऊंगा, ये तुम नहीं हो। ये बताओ आप। नेगेटिव थॉट whenever come in your mind, tell to yourself this is not you. Distance from your disidentify and with your thoughts. Please understand. आपका थॉट्स क्या है, ये देखने की कला आप में आनी चाहिए। एक्सेप्ट योरसेल्फ कंप्लीटली एक्सेप्टेड। मैं ऐसा दिखता हूँ, कंप्लीटली एक्सेप्टेड। आई हैव 5 फिंगर्स, somebody may have a 6 finger. एक्सेप्ट फर्स्ट है। इसका मेरे करियर के ऊपर कोई असर नहीं होता है। I have a respect. I cannot go to the military. I accept it ना। देश की सेवा मिलिट्री में जाने से ही करता हूँ ऐसा नहीं है। देश की सेवा बच्चों को पढ़ा के भी मैं कर सकता हूँ। देश की सेवा में कचरा उठाकर भी कर सकता हूँ। देश की सेवा में किसी को ज्ञान देकर भी कर सकता हूँ। देश की सेवा में मेरा घर क्लीन करके भी कर सकता हूँ। मेरा घर का वाटर टैप अगर मैंने अच्छा किया और पानी बचाया, तो मेरी देश की सेवा है। ये सब चीजें जब इकट्ठा होती है, ये कब होती है? When I start thinking in a silence. Right? Find your inner voice and state your truth before your higher self. आपको क्या अच्छा लगता है देखो, अंदर से सुनो, आपके साथ खुद के साथ बातें किया करो। राइट? वेट एज लॉन्ग एज इट टेक्स, लेट योर सोल गाइड यू। और बाद में सिर्फ अच्छा अच्छा और अच्छा ही होता है, लाइफ में कुछ नहीं होता है। दीज आर द थिंग्स which will help you. How can I better manage my time?
ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन आई लैंड दैट ड्रीम जॉब, मैं उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ इफ यू पर्सनली कॉल मी फॉर दैट आल्सो विद द परमिशंस ऑफ आनंद सर। गाइस, आई हैंड दैट ड्रीम जॉब विद इन द नेक्स्ट 4 years। कैसे मेरा नेक्स्ट ड्रीम जॉब कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन से कंपनी में। आप आज अगर टारगेट पकड़ोगे ना कि मेरी XYZ डेलॉइट में मेरा प्लेसमेंट होना चाहिए, आप अगर टारगेट पकड़ोगे कि आई हैव टू वर्क इन अ डेलॉइट, आई हैव टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, इट विल गेट कंप्लीटेड। अंडरस्टैंड गाइस, आप में वो ताकत है, हैसियत है, उसकी तरफ जाने का हैसियत है। कुछ गोल्स रखो लाइफ में, राइट। ओके, while doing it also दो चीजें मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप करेंगे या ना करेंगे पहले ये बताओ मुझे। आपको एक सजेशन देता हूँ मैं, करेंगे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. You all are getting a pocket money. From today, start investing 50 rupees to 100 rupees per month from your pocket money. Don't ask your parents for extra money. ये करना शुरू कीजिए जो आपके लाइफ के लिए सेफ रहेगा। दूसरी चीज, देयर आर वीकर सेक्शंस इन दिस सोसाइटी, राइट, जिनके बलबूते पर ही आप पढ़ रहे हैं, जो कचरा साफ करते हैं, ये करते वो करते। इनके लिए मैं पैसों की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इनके लिए आपका बॉडी माइंड उनकी सेवा में एटलीस्ट 1 hour इन 1 month, नाउ टेलिंग यू 1 hour इन 1 month। कुछ नहीं आता है आपको, डांस भी करना आता है तो ऑर्फनेज में जाके उनके साथ डांस करो। कुछ नहीं आता है आपको तो भगवत गीता का, कुरान का, बाइबल का, ज्ञानेश्वरी का, दासबोध का, कुछ भी वाहे गुरु जी का एक जाकर स्टोरी किसी ओल्ड एज होम में जाकर पेरेंट्स को बताओ, राइट। इसीलिए आप जीवित हो ये मत भूलना। आपको 2 हाथ दिए गए हैं, 2 पैर दिए गए हैं, 2 आंखें दिए गए हैं। सब कुछ जो अच्छा आपका है वो आपके लिए नहीं है। जिनका ये सब चीज अच्छा नहीं है उनको मदद करने के लिए आपका जन्म है। ये इस एटीट्यूड से अगर आप रहेंगे तो दुनिया में आपको कुछ कम नहीं पड़ने वाला है। वह इवन दो आप करोड़ में खेलेंगे तो जरूर, करोड़ में खेलेंगे तब आपका पैर जमीन पर होगा, राइट। Very much. Thank you very much. Thank you excellently. I really enjoy these sessions. I would love that if you have some questions, I would like to take this question. Yes, students, anybody has any questions? Ma'am, is it possible to get the contact details of sir? Yes, no issue. आपके सामने मैंने रखा था ना, second was there. Yes, second slide. हाँ मैं, yes, ले लो जो चाहिए वो ले लो। Yes, Palash. Anything else, my friends? Students, please put on your cameras. We'll have the photographs. Yes, Mohit sir. Thank you, sir, for such a wonderful session. And making the students aware about their connection to the self. They should also give priorities to themselves and understand what are their limitations and try to overcome the challenges by improving themselves. That is what Yes. is the takeaways, I think, from today's session, sir. Great, ma'am. Thank you very much, sir. Thank you very much. I'm really delightful and I'm really thank you for giving me opportunity. Ajoti Kumar ma'am, Vaishali ma'am is continuously in my contact, and I'm so because of my busy schedule, many time I fail to respond you ma'am. I'm so sorry for that. आप सभी It's लोगों ने okay, sir. आप सभी लोगों ने okay. मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बने रहना। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, उसमें टिके रहना। कुछ
कुछ नहीं लगता है. Thank you very much. Please give me a permission to leave if there is Yes, no sir. any kind of Thank question. you, sir. Thank you, sir. Thank you very sir. much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Yes. If you want, you can share individual your feedback with me. You have got my mobile number also. Thank you. Yes, sir. Thank you. Students, please fill the feedback. Thank you very much, sir. It is posted in the chat box. Thank you, sir.